Hello everyone, this is Professor Jagdish Mimple from NIT Nagpur. I request you to kindly like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will get the live update notification about the channel. Thank you. Okay, so very good morning to one and all. In the previous lecture, we have already seen about the simple queue, or we can say linear queue, how we can perform the insertion and deletion operation with respect to linear queue, how we can implement the function for insertion and deletion operation in linear queue. In today's lecture, we are going to see about the circular queue. So basically what it means a circular queue and why the concept of circular queue is implemented or invented. Okay. In case of a normal queue or in case of a simple queue, what happened? Suppose if your rear pointer goes in a forward direction, it means that if you have inserted the element, your rear pointer will be implemented by them always. If you want to perform a delete operation on your normal queue or we can say on linear queue, your front pointer will be implemented by one always. So once your rear pointer and front pointer will get in a forward direction, अगर एक बार आपका rear pointer और front pointer आगे चले गया, it means that we cannot put your front or rear pointer come back with the first position, even if the room is vacant, even if the location is vacant. It means that the reutilization of the memory or reutilization of the location will not be possible, will not be permitted in case of a linear queue. That means once your rear pointer and front pointer will get in a forward direction, so you cannot come back with your rear pointer and front pointer at the first position. It means that here you can say if you have insert the particular element, so rear pointer will be pointing to the first position. Again you want to insert the element, तो rear pointer यहाँ पे चले जाएगा. Again you want to insert the element, rear pointer will be implemented by one, rear will be here. Again you want to insert the element, rear will be here. So finally rear is here. Okay. Now, if you want to delete the element, so your front pointer will be here. Your front pointer is here. So you have to delete this element. So this element is deleted. Again, you want to delete the element. Again, this element is deleted. So your front pointer is over here. So likewise, you have to delete the element from your linear queue. Now, suppose if you want to insert again, I want to insert the element again. Your rear pointer reaches to the last position. आपका rear pointer कहाँ पे चले गया? It reaches to the last position. That means your rear pointer is here. That means it is pointing to the fourth location. Suppose this queue is maintained for 4 data. This particular queue is maintained or developed for inserting the 4 elements. So your rear pointer reaches at the last position. Okay. If you want to insert the element, so you will get a message. Your linear queue is full. It is full because rear pointer reaches to the last position. But if you see the queue or if you see the situation of queue, even if the two locations are vacant, that means this element is deleted, this element is also deleted. That means two rooms are already vacant and your rear pointer reaches to the last position. So you cannot come back with the first position and insert the data. अब फिर से उठ के फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकते and you cannot able to store the new data because you are working on a linear queue. This is a drawback of linear queue. To overcome this drawback, the concept of circular queue is implemented. Basically, the circular queue is in the fashion of circular or is in the fashion of cycle. साइकिल का जो आपका व्हीकल का जो आपका पहिया होता है, ठीक है, जो आपका रिंग होता है, ठीक है, इट इज working on the fashion of ring. There is a concept of ring buffer also. Okay. So basically, in case of a circular cube, what happens? If your rear pointer reaches to the last position, अगर आपका rear pointer last position पे चले गया है, so you can put your rear pointer or attach your rear pointer on the first location. It means that suppose these are the locations. Suppose these are the locations. Likewise, you can see here. This is a queue we have maintained. Suppose data is stored over here, that is 10, 20, 30, 5, 15, and 25. Okay, it means that if you insert the element, your rear pointer will be implemented by one always.
once your rear reaches to last position, जैसे आपका rear last position पे पहुंचता है, so you can come back with your rear pointer and attach with the first position like this. That means you have to make a circle. That means अगर आपने यहाँ से start किया है, so it will form a circle. इस तरीके से आपका circle form होता है. That means likewise this is a circle form. It means that once your rear pointer or front pointer reaches to the last position, so we can again connect your rear and front pointer to the first positions. So again, you have to start with the first. Now, what happened with this? Now, if you want to insert the element or if you want to delete the element from the queue, so it will move or it will rotate your rear pointer and front pointer in a circular manner, in a ring manner or in a ring buffer manner. It means that you have to rotate your rear pointer and front pointer in a circular manner. एक साइकिल के फॉर्म में हम लोग इसको रोटेट करते हैं. But when your appropriate condition is true, जब आपका कंडीशन ट्रू रहेगा तब you can insert or delete the data with the appropriate condition. When the condition is satisfied, so you will be able to insert or delete the data. What happened with the circular queue? Suppose if we are having this queue, suppose this is a queue we have maintained. Suppose there are how many total number of elements? Elements are 1, then this one is 2, 3, 4, this one is 5 and 6. This total queue is maintained for 6 elements. 6 element यहाँ पे है. 6 element के लिए हमने queue बनाया है. So we have to take the array of 6 elements. Now what happened? You have inserted the first element, so element will be stored at the first position. So आपके यहाँ पे 10 stored हो गया. Then rear again you want to insert the element. So आपका जैसे ही when you implement a circular queue, when you have entered or when you insert the first element into your circular queue, at the same time your front pointer will be put or will be on the position number 1. It means that जैसे ही आपके queue में पहला element insert होता है, at that time you have to change the position of your front pointer. You have to put your front pointer on the very first position where the first element is stored. Got it? Now you have inserted the first element, that means your front pointer is also there. Okay. After that, again you want to insert the element. Suppose आपने 20 insert किया, तो rear will be incremented by 1. 20 यहाँ पे stored हो गया. Again you want to insert the element, so rear will be here. आपका एक से बढ़ गया. Again you want to insert the element, again rear will be incremented by 1, so यहाँ पे आ गया. Again you want to insert the element, again rear pointer will be incremented by 1, so यहाँ पे 3 stored कर दिया. Again you want to insert the element, suppose यहाँ पे आ गया आपका rear, तो rear equals to last position. आपका rear यहाँ पे है. Consider it. Your rear is on last position and your front is on first position. Rear is on last position and your front is on first position. And again you want to insert the element. I want to insert again one more element. So is it possible to insert the element? No, it's not possible. Because अगर मैं rear को यहाँ से उठा के अगर first position पे अगर लेकर आता हूँ, but there is already data exists. Front pointer already आपका first position पे है. Room is not vacant. So no insertion is possible. Possible होगा क्या? नहीं होगा. That means your circular queue is full. Your circular queue is full. So how you will check when your circular queue is full? When your circular queue is full, you can directly check your rear pointer. Okay, rear pointer you can check with rear is equal to rear plus 1 mod of max. One formula we can use, rear is equal to rear plus 1 mod of max. Every time, if you want to find out whether your circular queue is full or not, so you have to see this formula. Or every time what happens, every time what we will do, whenever you want to insert the elements, your rear will be incremented by 1 always. अगर 5 पे होगा तो 6 पे जाएगा, तो 6 पे होगा तो क्या 7 पे जाएगा क्या? No, not at all. अगर वो लास्ट पोजीशन पे है, आपने 6 एलिमेंट के लिए क्यू बनाया है और रियर आपका 6 पे है, तो अगर मुझे उसको फर्स्ट पॉइंट पे लेकर आना है, फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आना है, सो आई शुड हैव टू चेक द कंडीशन. That condition is which condition is there? We need to check front is equal to rear plus 1 mod of max. Rear plus 1 mod of max. So here you can see in this example the rear or max value is 6. Max value is 6. Rear is on 6. Okay. So front is equal to rear plus 1 mod of max.
So rear plus 1, rear is on 6th position, rear is on 6th position. Okay, so you can say, now you can say here your rear is on 6th position, or suppose you have started with 0. ठीक है, अगर आपने यहाँ पे आपका अरे अगर 0 से स्टार्ट किया तो इट विल गोज टू टिल 5th एलिमेंट. सो 5 + 1 6. ठीक है, इट मींस दैट अगर आपका अरे 0 से स्टार्ट किया है आपने, सो आपका 6 एलिमेंट के लिए आपने क्यू बनाया है, इट मींस दैट इट स्टार्टेड विद 0 एंड इट गोज टिल द 5, बिकॉज 0 से स्टार्ट किया है, सो इट विल गोज टिल द 5. Okay, now you can check rear plus 1 mod of max. Rear is on 5, 5 plus 1 6, 6 mod of 6, that means rear plus 1 mod of max. Max is nothing but a size of the array. आपने कितने साइज के लिए बनाया है क्यों? 6 एलिमेंट के लिए, तो मैक्स वैल्यू इज 6. सो रियर प्लस 1, रियर इज ऑन 5 plus 1, that is 6, 6 mod of 6, you will get answer 0. अगर आपका फ्रंट का वैल्यू रियर प्लस 1 mod of max होता है, तो ऑब्वियसली फ्रंट कहाँ पे 0 पे है. अभी हमने जो फॉर्मूला पुट किया है, दैट इज रियर प्लस 1 mod of max, दैट इज रियर प्लस 1 mod of max क्या आता है? तो रियर आपका कितना है? रियर आपका 5 है, 5 plus 1 6, रियर आपका 5 है, 5 plus 1 6 हो गया, 6 mod of 6, मैक्स का वैल्यू कितना है? 6. सो 6 mod of 6 कितना हुआ? 6 mod of 6 we will get आंसर 0. अगर यहाँ पे मैं मॉड करता हूँ 5 plus 1 6, 6 mod of 6, सो आंसर यू विल गेट 0, यानी आपको 0 मिला. सो ये अगर इक्वेशन, ये जो आपका फॉर्मूला है, इसका वैल्यू आपको क्या मिला? 0. सो दैट मींस यू हैव टू चेक फ्रंट इज इक्वल टू 0. क्या फ्रंट की वैल्यू विच इज इक्वल टू रियर प्लस 1 mod of max है? Yes, obviously front is on 0. Front is on 0. Front आपका कहाँ पे है? Front 0 पे है, और rear plus 1 mod of max भी आपका क्या है? 0 आया. So that means the condition is true. Condition is true. That means your Q is full. That is one of the condition. When your circular Q is full, when front is equal to rear plus 1 mod of max is equal to 0, the rear plus 1 mod of max is equal to front, that means your Q is full. That is one of the condition when the circular Q is full. Got the condition? So we will see the implementation, and these are the different operations we will perform on the circular queue. You can insert the data with the help of rear pointer or with the help of rear end, and with the help of front, we are going to delete the data from the circular queue. Okay. So in both the cases, if you want to insert the data or delete the data into the circular queue, your rear and front pointer would be incremented by 1 always. Okay. If you want to delete the data, front will be incremented by 1. If you delete the data, your rear pointer will be incremented by 1 always. Okay. After that, we can see the various application of circular queue, and then after we will see the implementation, how we are going to implement a function for insertion and deletion operation, or performing the insertion and deletion operation in the circular queue. Now we'll see what are the various application of circular queue. It may happen, it will ask you in the university examination, write down the application of circular queue. Okay, so there are various type of circular queue applications, or in the various scenario we can use a circular queue. The very first thing is that a memory management. Okay, in case of a memory, suppose if you have a computer memory, if you have our mobile memory, what happened? Memory is a memory always, it should be in the reutilization form. Memory हमेशा reutilize होना चाहिए. It is not a one-time storage. It means that if one-time storage is happened, suppose if the memory is given to you, and if you have stored the data permanently, अगर बाद में उसको आपने डिलीट भी कर लिया तो उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मेमोरी? नोन एट ऑल. इट मींस दैट अगर आपका परमानेंट मेमोरी है, इफ यू हैव स्टोर्ड दैट डेटा परमानेंटली, इवन इफ यू हैव डिलीटेड दैट डेटा एंड यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट मेमोरी, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मेमोरी? We require then huge amount of memory because we have stored the data permanently. We have stored the data permanently. Just memory management. So in case of a memory management, or if we are going to store the data into the memory, so we are not stored any data permanently. Okay, that means if the data is permanently, we are not saying that data is stored permanently. That it means that if you delete the data from the memory, so it may happen, or the memory, it will be in this format. If we can, if we want to reutilize that memory, so then we can. Okay, it means that if you store the data into the memory, आपने थोड़ी देर के बाद वो डेटा को डिलीट कर दिया, या फिर if you have deleted data after 2 months, 3 months, whatever, you have deleted the data,
So we are able to store the new data in that particular memory. Okay, so that thing should be available. But if that thing is not available, okay, so we require a large amount of data. Even if the memory is available, I have stored the data into the memory. मैंने 1 GB का data store किया था. After that I have deleted that data. But if I am not able to store the again new data into that utilized memory, so we required the more amount of memory. That is, if the reutilization is not possible. So if we use the concept of reutilization, so memory, in case of a memory management, we will use a circular queue. That means once you insert the data, if you have deleted the data, so it is reusable. That memory should be reusable. So in case of a memory management, we will use the concept of circular queue. After that, CPU scheduling. CPU scheduling, it means that at a time, suppose if you have a client server network, at a time अगर सर्वर के लिए काफी सारे लोग एक्सेस करते हैं, if we are sending the request to a server for access permission, okay, so it will be, so in CPU scheduling we will use the concept of circular queue. It means that once the CPU is allocated to the particular machine or particular task, okay, if the task is over, then again that CPU is allocated to some other process. It means that in the circular format, once lot many people are accessing the server and sending the request at a time, so it will be in a circular fashion. Okay, the person which has sent the request first, it will be allocated the CPU first. They have to perform a task. After performing the task, we have to release the CPU, and CPU is available for the next person. The next person can access this. So likewise in the circular manner. Okay, so if we have a, suppose if we have maintained a queue for 20 people or 10 people, so that 10 people will be in the rotating manner. Okay, that means in case of a CPU scheduling, the operating system also uses a circular queue to insert the process and then execute them. So what we have to do, we have to, whatever process or whatever client have requested for a CPU, that client will be put it in the waiting area, and that queue, that particular client, or we can say that particular task or process will be put it into the waiting queue, and it will be executed in the form of circular manner. It means that once the task is allocated to the CPU, it will execute that task and release the CPU. Then it will allow, it is eligible for the second person or the second client or the second person. So likewise, in this repeated dealing, we will use a circular queue. After that, traffic system in traffic system we will use a circular queue. आप अगर traffic system भी देखते हैं, so we will use circular fashion. So in a computer control traffic system, the traffic light is one of the best example of the circular queue. Each light of traffic light gets on one by one after every interval of time. Every j interval of time. It means that अगर आप traffic signals भी देखते हो, ठीक है? So what happened with the traffic signal? The one signal is on for a particular amount of time. Then second signal, then third, then fourth, then fifth. Likewise, then again the first signal. Likewise, okay? आपका circularly घूमता है, ठीक है? Circular fashion में आपका traffic signals on off होता है. So there is also a concept of circular queue where we can use a circular queue concept. So there are three different areas where memory management, CPU scheduling, and traffic system we will use a circular queue. Then after we will see what is the function, how we can implement a function for circular queue. So now we will first how to write a function for insertion, performing the insertion operation into the circular queue. So this is a function we have written, which is used to implement the insertion operation with respect to the circular queue. CQ stands for circular queue. Now, when we write the function for any queue, or when we are going to write the function, so always function start with a return type. So void is the return type. After that, the name of the function. So insert CQ or insert, you can give any name. So insert is the name of the function. So what we require? We required a queue. That means we required one array. The name of the array is queue. Just normal like alphabetically queue there. You can give any name. You can give CQ, you can give circular queue, whatever you want to give. Because we required one array, so for that array you can use any name. After that, there is an element. Element is nothing but which element you want to store, which data you want to store. So that means a new element we required, because in case of a circular queue or any queue, if you want to store the element, we require a new data or new element that we want to store into the queue. After that, always when we are performing the insertion operation, so always you need to check the availability of this space. Whenever we are going to store data anywhere else, जब भी हम data store करने की बात करते हैं, so at that time
every time you need to see the availability of the space, whether the space is available or not, where you want to store the data. जहां पे आपको डेटा स्टोर करना है वहां पे जगह अवेलेबल नहीं है, जब जगह अवेलेबल है या नहीं है, you need to check the availability of the space. So how we are going to check the availability of the space? Okay, so how we are going to check the availability of this space? That means we have to check if front is equal to rear plus a mod of max. You have to check whether your whether the data or whether the space is available on the queue or not. So now this is so this is one example, or this is a formula we need to put. So we have to check if front is equal to rear plus 1 mod of max. So we have put it this formula, rear plus 1 mod of max. If we put rear plus always, so if our pointer, if our rear pointer reaches to last position, suppose 5 एलिमेंट के लिए क्यू मेंटेन किया हुआ है एंड रियर इज ऑन द 5th पोजीशन, रियर आपका 5th पे है, तो इफ आई विल पुट रियर प्लस इट विल गोस टू 6, ठीक है. और यू कैन डायरेक्टली पुट व्हेन रियर रीचेस टू द लास्ट पोजीशन, सो यू हैव टू पुट डायरेक्टली रियर पॉइंटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट पोजीशन. So for this particular situations, we need a one formula. Okay, if we have taken this formula so that your program or function will get very easy. So always you need to check with this particular formula. Front is equal to rear plus a mod of max. Okay, that means what you have to do, you have to check whether the front is pointing to that value which is equal to rear plus 1 mod of max. अगर front का value rear plus 1 mod of max अगर होता है, max is nothing but the size of the array. आपने कितने एलिमेंट्स के लिए आपने क्यू मेंटेन किया हुआ है, that is nothing but max. You can give a size also, you can give a n also, depends on you which type of variable you want to use. Okay, so you have to check front is equal to rear plus 1 mod of max. You need to check both the values. If both the values are set, if front is on 0, suppose if front is on 0 and this value is also got 0, in the previous example I have already told you. Okay, suppose rear is on last position, suppose rear is on 5. Okay, so 5 plus 1 6 mod of max, 6 mod of max, 6 mod of 6 कितना होता है 0, and rear is your front is also on 0, so 0 will get, it means that no insertion is possible. Front 0 पे है, that means suppose these are the locations, so suppose these are the locations, ऐसे इस तरीके से अगर है, so suppose यहाँ पे आपका front है, this one is your front value, this one is your front value, and this one is your rear value. In the last positions we are having the rear value. Okay, and if you're finding rear plus 1 mod of max, suppose rear आपका 5 पे, rear plus 1, 5 plus 1 6 mod of 6, you will get answer 0. So इस ये पर्टिकुलर इसका आंसर आपको क्या मिला, 0 मिला है. ठीक है, एंड फ्रंट इज ऑल्सो ऑन 0. अगर आपका रियर लास्ट पे है, दैट इज रियर प्लस 1 mod of max, इसका आंसर आपको 0 मिला, फ्रंट भी आपका 0 है, इट मींस दैट योर सर्कुलर क्यू इज फुल, नो इंसर्शन इज पॉसिबल. ठीक है, नो इंसर्शन इज पॉसिबल. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, this is the first location, then second location, then this one is the third location, this one is your fourth location, and this one is the fifth location. Okay, consider it. Okay, your front is here, this is your front value, front counter. Okay, if I have stored over here, suppose यहाँ पे मैंने 5 stored कर दिया, and I have stored 3 over here, I have stored 9 over here, I have stored 10 over here, and I have stored 15 over here. It means that, okay, it means that my real pointer is on here. It means that my real pointer is here. My real pointer is it means that my real pointer is here. Okay, now we will see the formula. My real pointer is here. Okay, now we have to check again. I want to insert the element. All the locations are filled with some sort of data. Now rear is on 5. Okay, I have started with 1, goes to 5. I have started with 0, so goes to 4. Okay, so always you need to try start with 0 only. Okay, because 5 plus 5 अगर करते तो you will get 10. 10 divided by 5. Okay, then also you will get a 0 value. Okay, now you can see rear is on 5. Okay, if you want to again insert the element, you want to insert the element. Okay, so now you have to again execute this function. Okay, now you have to check front कहाँ पे है, front कहाँ पे है, front is on 1.
front is on 1, okay, and your rear is on here. Okay, we have started with 0 so that you will get a proper value. Okay, start with 0, 0 1 2 3, so आपका यहाँ पे लास्ट में 4 आ जाएगा. If you start with 0, so लास्ट आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ठीक, 1 2 और ये इसको 3 करना. ठीक है, now you can see your rear is on 4, so 4 plus 1, 4 plus 1 will get 5, 5 mod of 5, 5 mod of 5 will get a answer 0. so front कहाँ पे आपका 0 पे, front का वैल्यू आपका 0 है, और ये जो आपने फॉर्मूला लगाया इसका भी वैल्यू आपको 0 मिला. दैट इज फ्रंट आपका 0 है, रियर आपका लास्ट पे है. व्हाट ऑफ दिस द क्यू इज फुल, सो यू विल गेट आंसर सर्कुलर क्यू इज फुल. आपको एक मैसेज आएगा, प्रिंट एरर सर्कुलर क्यू इज ओवरफ्लो, यू विल गेट द आंसर सर्कुलर क्यू इज ओवरफ्लो. ओके, नाउ वहां से ब्रेक हो जाएगा. एल्स अगर आपका मान के चलते हैं, इफ योर फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर प्लस 1 mod ऑफ मैक्स, अगर आपका फ्रंट रियर प्लस 1 mod ऑफ मैक्स इक्विवेलेंट नहीं है, इसका मतलब it means that you are having the space in the queue, you can insert the element. Okay, you are able to insert the element because you are having the empty field or you are having the empty locations in the queue. Okay, consider it कि suppose आपने यहाँ से element delete कर दिया, ये element delete कर दिया, तो front will be implemented by 1, तो front आपका 1 पे चले जाएगा, front will be pointing here. ठीक है, now we can see front आपका यहाँ पे चलेगा. यह डिलीटेड दिस वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू को आपने डिलीट कर दिया, तो ये रूम आपका वैकेंट हो गया, सो इंसर्शन इज पॉसिबल. अगेन वी हैव टू चेक इन फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1 mod ऑफ मैक्स है क्या, नहीं. फ्रंट का वैल्यू कहां पे 1 पे, रियर कहां पे 4 पे, सो 4 प्लस 1 mod ऑफ मैक्स है क्या, नहीं है. कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली कहां पे जाएगा, इट इज डायरेक्टली गोस टू द एल्स पार्ट. एल्स पार्ट पे जाने के बाद इट विल प्रिंट रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 mod ऑफ मैक्स. ठीक है, दैट मींस रियर को x से आगे बढ़ाना है. सो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 या फिर रियर प्लस प्लस इक्विवेलेंट टू द रियर प्लस 1 mod ऑफ मैक्स. आप करके देखिए, अगर रियर आपका 5 पे है या फिर रियर आपका 4 पे है. ठीक है, रियर आपका 4 पे, सो 4 प्लस 1, सो 4 प्लस 1 आंसर इज 5. 5 mod ऑफ 5 आंसर यू विल गेट 0. 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, आपका 5 होगा, और 5 को आप मॉड करो 5 से, सो यू विल गेट आंसर 0. दैट मींस रियर आपका कहां पे चले जाएगा, 0 पे चले जाएगा. एंड ये 0 पोजीशन पे आप, ये जो 0 पोजीशन है यहाँ पे आप अभी डेटा डालोगे. दैट मींस जो भी एलिमेंट होगा तो आप कहां पे डालोगे, क्योंकि रियर पोजीशन पे डालोगे. ठीक है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू और -1, ये कब आएगा, जब आप क्यू में फर्स्ट डेटा एंट्री होगा. व्हेन इफ फ्रंट इज इक्वल टू और -1, फ्रंट अगर -1 पे है, तो जब आपके क्यू में फर्स्ट डेटा एंट्री होगा, एट दैट टाइम यू हैव टू पुट योर फ्रंट पॉइंटर ऑन द 0th पोजीशन. यानी already I have told you, when you insert the first element into the circular queue, at the same time you have to put your front pointer on the 0th position. तो अगर -1 पे होगा तो उसको आपको कहाँ पे सेट करना है, 0 पे सेट करना है. सो लाइकवाइज वी हैव टू इंसर्ट द एलिमेंट. ठीक है, सो वैसे ही अगर सपोज आपकी कोई भी एलिमेंट, सपोज आपका रियर यहाँ पे, कंसीडर इट रियर इज ऑन हियर, रियर आपका यहाँ पे, सपोज यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट. ठीक है, रियर आपका यहाँ पे. ठीक है, नाउ ये वाला लोकेशन एम्प्टी, कंसीडर इट दिस वन इज एम्प्टी, यहाँ पे कुछ नहीं है. यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट, रियर प्लस प्लस करोगे, सो रियर प्लस प्लस मींस एल्स यहाँ पे होगा रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1. रियर कहाँ पे है, 3 पे, 3 प्लस 1 4, 4 mod ऑफ 5, 4 mod 5 करोगे तो आंसर यू विल गेट 4. यू विल गेट आंसर 4 बिकॉज न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू आपका बड़ा होता है, तो यू विल गेट आंसर इन न्यूमरेटर. ठीक है, जो भी न्यूमरेटर का वैल्यू होता है आपको मिलता है. सो 4 mod ऑफ 5 करोगे, यू विल गेट आंसर 4. सो आपका रियर कहाँ पे जाएगा, रियर आपका 4 पे जाएगा, और यहाँ पे आप जो नया एलिमेंट है वो आप स्टोर करोगे. सो लाइकवाइज वी हैव टू इंप्लीमेंट द इंसर्शन फंक्शन with respect to circular queue. Got it? Similarly, now if you want to delete the element, okay, now if you want to delete the element, so you can see here. So if you want to delete the element, अगर suppose आपको element delete करना है, so we need to write the functions or implement the functions for deletion operation. So whenever you are going to delete the element from your circular queue, जब हम circular queue से data को delete करेंगे, so every time whenever we are talking about a deletion operation, so you have to check the underflow condition. जहां से delete कर रहे हैं वहां पर डेटा है या नहीं है, जिस क्यू से हम डेटा निकालना चाहते हैं उस क्यू में डेटा अवेलेबल है या नहीं है, we need to check, okay, whether the data is present in the circular queue or not. So how we are going to check the empty condition,
So there are two conditions when front and rear is on the same position. When front and rear is on the same positions, ये जो है आपका, ठीक है. So this one, see, when front is equal to rear, front और rear अगर एक जगह पे है, फ्रंट और रियर एक जगह पे कब रहेंगे? इट इज ऑन द इनिशियल कंडीशन. सपोज फ्रंट और रियर आपका -1 पे है, दैट मींस आपके क्यू में एक भी डेटा नहीं गया, यू हैवंट इंसर्टेड अ सिंगल डेटा इनटू द क्यू. एट दैट टाइम योर फ्रंट एंड रियर विल बी ऑन द सेम पोजीशन. ओके, दैट मींस एक ये कंडीशन हो सकता है. वन मोर कंडीशन इज दैट इन क्यू ओनली सिंगल डेटा इज प्रेजेंट, only single is data is present. At that time front and rear will be on the same position. अगर आपके क्यू में एक ही डेटा बचा रहेगा तो ही आपका फ्रंट और रियर एक पोजीशन पे आएगा, या फिर आपके क्यू में एक भी डेटा नहीं आएगा तब आपका फ्रंट और रियर सेम पोजीशन पे रहेगा. दैट फ्रंट और रियर इज ऑन द -1 पोजीशन. इनिशियल कंडीशन, आपकी क्यू में कुछ भी नहीं गया है तो फ्रंट -1 पे, रियर -1 पे, नो डेटा इन द क्यू. बिकॉज अगर आपने क्यू में एक भी डेटा डाला तो आपका फ्रंट पॉइंटर कहां पे आता है? फ्रंट पॉइंटर आपका 0 पे चले जाता है. ठीक है, बट आपका फ्रंट और रियर सेम पोजीशन पे, दैट इज -1 पे, दैट मींस आपके क्यू में एक भी डेटा एंटर नहीं है. या फिर फ्रंट और रियर सपोज -1 पे नहीं है, समवेयर एल्स है, फ्रंट और रियर सपोज 5th पोजीशन पे, फ्रंट और रियर सपोज 5th पोजीशन पे, दैट मींस आपके क्यू में सिर्फ एक ही डेटा बचा हुआ है, आपके क्यू में सिर्फ एक ही डेटा बचा हुआ है. दैट्स व्हाई योर फ्रंट एंड रियर पोजीशंस ऑन द सेम पोजीशन. गॉट इट? ठीक है, दैट मींस फ्रंट एक से आगे बढ़ता है व्हेन यू वांट टू डिलीट, यू वांट टू परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन. So one of the condition when front and rear is on the same position, कि हो सकता है फ्रंट और रियर आपका सेम पोजीशन पे, and rear is on -1. Rear is on -1 है, that means you haven't inserted the element into the queue. When rear is on -1, rear -1 पे ही है, यानी आपके क्यू में एक भी डेटा एंट्री नहीं हुआ है. So that is a condition when circular queue is empty. So when front is equal to rear, आप चेक करेंगे कि फ्रंट और रियर का एक पोजीशन पे है या फिर रियर इज इक्वल टू -1. क्या रियर -1 पे है क्या? ठीक है. So when both the conditions are true, when both the conditions are true, front and rear is on the same position. Okay, so you have to take this one also. It means that you can see, you can place the or in condition also instead of and. You can try the or condition, because front and rear is equal to, if front and rear condition, rear positions, front and rear will be having the same position, that is one more condition. That means if front or rear is on the same positions, your circular queue is empty. Otherwise, rear is on -1. अगर rear is equal to -1 है तो भी आपका सर्कुलर क्यू अंडरफ्लो होगा. एक तो हो सकता है कि फ्रंट और रियर सेम पोजीशन पे तो आपका सर्कुलर क्यू एम्प्टी होगा, या अदरवाइज रियर इज ऑन -1, बट ऑब्वियस रियर इज ऑन -1 तो आपके क्यू में एक भी डेटा एंट्री नहीं हुआ है. इट मींस दैट सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी. सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, सो यू कैन से सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी और अंडरफ्लो ब्रेक हो जाएगा. अदरवाइज नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? नहीं है तो क्या करना है? जो क्यू के फ्रंट पोजीशन पे जो वैल्यू है, यानी फ्रंट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू का आपने एलिमेंट पे डाल दिया. यानी आपको पता चलना चाहिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच एलिमेंट इज डिलीटेड करंटली. सो क्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर पे जो भी वैल्यू होगा, इट इज गिवन टू द एलिमेंट, इट इज गिवन टू द एलिमेंट. एंड व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, आई हैव टू चेक इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, फ्रंट और रियर का सेम पोजीशन पे डिलीट करने के बाद, ओके, जब आपने फ्रंट से डेटा उठाया एलिमेंट में डाल दिया, सो यू हैव टू चेक इफ फ्रंट एंड रियर इज ऑन द सेम पोजीशन. अगर है सो यू हैव टू सेट फ्रंट एंड रियर इज ऑन द -1 पोजीशन. दैट मींस अगर आपका फ्रंट और रियर सेम पोजीशन पे है, इट मींस दैट देयर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट वी शुड नीड टू डिलीट फ्रॉम द क्यू. ओके, अगर ऐसा होता है सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट फ्रंट एंड रियर इज ऑन द -1. दैट मींस द इनिशियल कंडीशन, है ना, क्यू में एक ही एलिमेंट था, आपने वो डिलीट कर दिया और फिर आपने क्या किया, फ्रंट और रियर को -1 पे सेट कर दिया. ठीक है, अगर ऐसा होगा, नहीं होगा तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 mod of max. फ्रंट को इससे आगे बढ़ाना है, यानी एलिमेंट को आपने डिलीट कर दिया. ये वाले स्टेटमेंट से आपने क्या कर दिया, एलिमेंट को डिलीट कर दिया. दैट इज क्यू ऑफ फ्रंट का जो डेटा आपने एलिमेंट में डाल दिया. अभी आप क्या कर रहे हो, वो डेटा आपने उठा लिया. आप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज द फ्रंट पॉइंटर. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, भले ही आपने फ्रंट को एक से आगे बढ़ाया बट डेटा विल बी एज इट इज till you haven't inserted new data. जब तक फ्रंट पे आपने फ्रंट को इंक्रीज कर दिया, फ्रंट पॉइंटर को, फ्रंट सपोज फ्रंट 2 पे है, आपने एलिमेंट को डिलीट किया, नहीं फ्रंट प्लस कर दिया तो फ्रंट 3 पे चले गया, तो फ्रंट 2 पे जो वैल्यू है एज इट इज रहेगा जब तक आप उसको वो वैल्यू को डिलीट नहीं करते या फिर उस पे डेटा ओवरराइट नहीं करते. गॉट इट? ठीक है, सो else front is equal to front plus 1 mod of max, which is equivalent to the front plus 1 mod of max. So don't be confused, front plus 1 mod of max क्या है?
इट इज इक्विवेलेंट टू फ्रंट प्लस प्लस। आप चेक करेंगे अगर फ्रंट 2 पे है, ठीक है, अगर फ्रंट 2 पे है सो 2 + 1 3, 3 mod of max, 3 mod of max, सपोज मैक्स वैल्यू 5 है तो 3 mod of 5, so will get answer 3, that means front 2 पे था अभी वो 3 पे चले जाएगा। so that is one of the same thing, front plus plus करो या फिर front is equal to front plus 1 mod of max करो। so likewise we have to implement a function for deletion operation with respect to the circular cube। hope everybody understood the concept of circular cube, what are the drawbacks of linear cube. To recover that drawback, the concept of circular cube was implemented, and how we are going to implement a function for insertion and deletion operation with respect to the circular cube. So with this, thank you one and all. Thank you.